Bismillahirrahmanirrahim. Our today's lecture is about the lenses. That is, what are the lenses? We are going to discuss about the lenses and its types. It is our today's lecture. This is class 8th and chapter or unit name is lenses. Lenses is the chapter name or unit name, and our today's lecture is about the lenses and the related terms. Lenses and the related terms. This is our today's lecture. So three things we are going to discuss in lecture. That is, what are lenses, and then the types of lenses and the related terms to the lenses. These things we are going to discuss in this lecture. Now first is a lens. What is a lens? The transparent material bounded between two surfaces such that at least one of them is a curved surface is called a lens. The transparent material bounded between two surfaces such that at least one of them is a curved surface is called as a lens. Diagrammatically, lenses are as shown. These are the lenses. This is a lens, this is a lens, this is a lens. Here the two surfaces are curved. This is a curved surface, this is a curved surface. So it is a lens. Here one surface is plane, but at least one is a curved surface. So at least one surface must be a curved surface, so it is a lens. Also here are two surfaces, both are the curved surface, so it is a lens. Here one surface is plane, but the other surface is curved, so it is also a lens. So for the lens, it is a condition that at least one surface must be a curved surface. If one is plane, but the other surface must be a curved surface. So here this is curved, and here this is a curved surface. So all these are lenses. So for the lens, at least one surface must be a curved surface. Then we have types of lenses. There are two types of lenses. That is, first type is a convex lens or the converging lens. First type of lenses are convex lenses or converging lenses. Second is concave lenses or the diverging lenses. These are the two types of lenses. So lenses has these two types. One is convex lenses, second is concave lenses. Now, number one, what is convex lens? We are going to discuss what is convex lens. The lens which is thick at the center and thin at the edges is called as a convex lens. The lens which is thick at the center and thin at the edges is called a convex lens. Or the second definition, the lens which converges the parallel rays of light at a point is called a convex lens or converging lens. The lens which converges the parallel rays of light at a point is called as a convex lens or converging lens. Now, this is a convex lens. According to first definition, the central point is thick. This is a thick portion and this is a thin portion. So here it is thick, at the center it is thick, but at the edges here it is thin. So it is a convex lens. And according to second definition, these are the parallel rays. This is one ray and this is second ray. When these rays pass through the convex lens, these rays combine at this point. So this lens through which the rays pass and combine at a point, this lens is called as a converging lens or convex lens. So parallel rays when pass through this lens, then after passing through the lens, these rays combine at this point. So this lens is going to converge the rays at this point. So this lens is called a convex lens or converging lens. And this point at which the rays combine, this is called focus. This is focus point.
Then we have types of convex lens. There are three types of convex lens. Number one, the double convex lens or biconvex lens. Double convex lens or biconvex lens. Now, what is a double convex lens or the biconvex lens? That type of convex lens whose both the surfaces are curved outward. Then the lens is called biconvex lens or double convex lens. That type of convex lens whose both the surfaces are curved outward. Then the lens is called biconvex lens or double convex lens. Now here, this is a biconvex lens. This surface is curved outward. This surface also curved outward. So this surface is curved outward, and also this surface is curved outward. So both the surfaces are curved outward. So this is biconvex lens or double convex lens. This is the first type of convex lens. The second type of convex lens is the plano-convex lens. That type of convex lens whose one surface is plane and other surface is curved, other surface is convex, is called as the plano-convex lens. Now this is a plano-convex lens whose one surface is plane and other is convex surface. So this is a plano-convex lens. So in plano-convex lens, one surface is plane. So such type of convex lens is called plano-convex lens. Then the third type of convex lens is concavo-convex lens. That type of convex lens whose one surface is convex and other is concave is called concavo-convex lens. Now this is a concavo-convex lens. This surface is convex surface, but this surface is concave surface. This surface is concave and this is a convex surface. So this is called concavo-convex lens. This is third type of convex lens. Now the second type of the lens is concave lens. What is a concave lens? The lens which is thin at the center and thick at the edges is called as a concave lens. The lens which is thin at the center and thick at the edges is called as a concave lens. Or the second definition, the lens which diverges the parallel rays of light is called as the concave lens or diverging lens. The lens which diverges the parallel rays of light is called as the concave lens or diverging lens. Now this is the concave lens. Why it is concave lens? It is thin at the center and thick at the edges. Here it is thin, but here it is thick. So at the center it is thin, so it is a concave lens. Also, according to second definition, these are the parallel rays of light, this ray and this ray. These parallel rays of light, these two rays. After passing through the lens, these rays diverge. This is diverging, this is diverging. So this lens is called as a diverging lens or concave lens because this lens diverges the parallel rays of light. So it is a concave lens or diverging lens. Now these rays appear to be coming from this point F. These appear to be, if we trace these rays backward here and this ray here, they combine here at this point F. So this F point is called as focus of the concave lens. Now types of concave lens. There are three types of concave lens. Number one, the double concave lens or biconcave lens. Now what is the double concave lens? That type of concave lens whose both the surfaces are curved inward is called double concave lens or biconcave lens. Now this is a biconcave lens. This surface is curved inward and also this surface is curved inward. So both the surfaces are inward and inward.
both the surfaces are inward, so this is a double concave lens. Now, second type of concave lens is a plano-concave lens. That type of concave lens whose one surface is concave and other is plane is called plano-concave lens. Now, this is a plano-concave lens because one surface is plane and other is concave. So, it is a plano-concave lens. Now, third type of concave lens is a convexo-concave lens. What is a convexo-concave lens? That type of concave lens whose one surface is convex and other is concave. This is called as convexo-concave lens. Now, this surface is convex type and this surface is concave type. So, it is a convexo-concave lens. This is third type of concave lens. So, these are the three types of concave lens. Now the terms related to lenses, there are different terms related to lenses. We are going to discuss these terms. First term is center of curvature. This is the first term. Center of curvature is noted by C. What is center of curvature? The center of sphere of which the lens is a part is called as a center of curvature. The center of sphere of which the lens is a part is called center of curvature. Now this is a sphere. This is a sphere. And from this sphere we make this lens. So this lens is a part of this sphere. So center of this sphere is called as center of curvature. Center of this sphere is called as center of curvature. Because this lens is a part of this sphere, so center of this sphere is called center of curvature. And center of curvature is noted by C. Now every lens has two center of curvature, one on this side, other on this side. So every lens has two center of curvatures. Next term is optical center. It is noted by O. The central point of the lens is called as the optical center. Central point of the lens is called optical center. For example, this is a lens and this central point, which is a dotted point. This dotted point is a central point. This dotted point is called optical center. So optical center is the central point of the lens. So this dotted point is a central point. It is called optical center. Next is the principal focus or focal point. Next point is principal focus or focal point. What is the focal point? The point at which rays after passing through the lens combine is called principal focus. For example, these rays, parallel rays are coming and these two rays after passing through the lens combine at the point. This point at which these rays combine, this is called principal focus or focal point. So this focal point is noted by F. So F focal point is what? The point at which the rays combine after passing through the lens. This is called focal point and noted by F. And every lens has two focal points, one on this side, other on this side. This F is also a focal point. Next is principal axis. What is principal axis? The straight line passing through the center of curvatures and optical center is called principal axis. The straight line passing through center of curvatures and optical center is called principal axis. Now this is the straight line. This line is called principal axis because this line is passing through center of curvature here and then optical center. So this line is passing through center of curvatures and optical center. So this straight line is called principal axis. Also for the concave lens, this is principal axis because this line is passing through center of curvatures and optical center and through principal focus. So this line is called principal axis. Next point is focal length. The distance between optical center and principal focus. This is called focal length. This is optical center
This point O is optical center and F is focus. So distance between these 2 points is called focal length, and focal length is denoted by small f. It is denoted by small f. So what is focal length? The distance between optical center and principal focus. This is called focal length. So f is the focal length. Then we have a worksheet. In worksheet, I am going to give you different questions. You solve these questions, and this will improve your study. So in worksheet, different questions I am going to give you. You solve these questions, and this way your study will improve. This worksheet is very beneficial for you. This will improve your study. You solve this worksheet. This is a worksheet. These are different questions. Define lens, define convex lens, draw concave lens, define center of curvature of the lens, define principal focus, what is focal length, define converging lens, show the refraction of rays through the concave lens, define principal axis, show focal length diagrammatically. These are different questions of the worksheet. You solve these questions. This will improve your study, and this is very beneficial for you. This worksheet is very beneficial for you. You solve this worksheet. You answer all these questions. These are different questions. You answer these questions. तो ये हमारा 8th क्लास का लेक्चर है. ये चैप्टर या यूनिट नेम जो है लेंसेज है. ये लेंसेज चैप्टर नेम है या यूनिट नेम है. हमारा आज का लेक्चर है लेंसेज और रिलेटेड टर्म्स. लेंसेज और उसकी रिलेटेड टर्म्स, इस बारे में हमारा आज का लेक्चर है 8th क्लास के लिए. तो 3 चीज़ें इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. लेंसेज क्या है, लेंसेज की टाइप्स क्या हैं, और लेंसेज से रिलेटेड टर्म्स कौन सी हैं. इनको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, इस लेक्चर के अंदर. तो लेंस क्या चीज़ है? लेंस वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो 2 सरफेसेस के अंदर बाउंड होता है, और इस अंदाज में से कम एक सरफेस कर्ड होनी चाहिए. मसलन ये इसकी देखें 2 सरफेसें दोनों कर्ड हैं. इसकी एक सरफेस प्लेन है, एक कर्ड है. तो कम से कम एक सरफेस अगर कर्ड होगी तो इस किस्म के डिवाइस को लेंस कहते हैं. हाँ, यहाँ दोनों कर्ड हैं तो ये भी लेंस है. यहाँ कम से कम एक कर्ड ज़रूरी है, तो एक कर्ड है तो ये भी लेंस है. यहाँ दोनों कर्ड हैं, ये भी लेंस है. यहाँ फिर एक सरफेस कर्ड है, एक प्लेन है, एक कर्ड है. तो कम से कम एक सरफेस कर्ड हो तो फिर हम उसको लेंस कह सकते हैं. दोनों कर्ड हों तो फिर भी लेंस है, लेकिन कम से कम एक सरफेस कर्ड होनी चाहिए तो फिर भी लेंस है. तो ये सारे लेंसेज हैं, इनकी कम से कम एक सरफेस ज़रूर कर्ड है. यहाँ के टाइप्स ऑफ लेंसेज हैं. लेंसेज 2 तरह के हैं. कन्वेक्स लेंसेज जिनको कन्वर्जिंग लेंसेज भी कहते हैं, कनकेव लेंसेज जिनको डाइवर्जिंग लेंसेज कहते हैं. तो ये लेंसेज की 2 टाइप्स हैं. पहला कन्वेक्स लेंस है. कन्वेक्स वो लेंस वो होता है जो सेंटर से मोटा होता है और एजेस से पतला होता है, उसको कन्वेक्स लेंस कहते हैं. या कन्वेक्स लेंस की दूसरी डेफिनेशन ये है कि जो पैरेलल रेज को कन्वर्ज करता है, किसी एक पॉइंट पर मिला देता है, किसी एक पॉइंट पर, उसको कन्वेक्स लेंस कहते हैं या कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं. मतलब ये लेंस है, देखें सेंटर से मोटा है और एजेस से पतला है, इसको कन्वेक्स लेंस कहते हैं. और दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक ये पैरेलल रेज आके लेंस से गुजर के एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती हैं. तो इस किस्म के लेंस को, जो पैरेलल रेज को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर दे, इस किस्म के लेंस को कन्वेक्स लेंस कहते हैं. और ये पॉइंट जिस पे इकट्ठा करता है इसको फोकस पॉइंट कहते हैं. आगे कन्वेक्स लेंस की टाइप है. इसकी 3 टाइप हैं. पहला डबल कन्वेक्स लेंस, जिसको बाई कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं. ये वो होता है जिसकी दोनों सरफेस जो हैं कन्वेक्स होती हैं और आउटवर्ड होती हैं. देखिए आउटवर्ड सरफेस है, ये भी आउटवर्ड, और दोनों कन्वेक्स सरफेस है. इसको डबल कन्वेक्स लेंस कहते हैं. दूसरी किस्म जो है प्लानो कन्वेक्स लेंस है. ये वो होता है जिसकी एक सरफेस प्लान होती है, दूसरी कन्वेक्स टाइप होती है. इसको प्लानो कन्वेक्स लेंस कहते हैं. तीसरा है कन्वेक्सो कन्वेकेव लेंस, कनकेवो कन्वेक्स लेंस, जिसकी एक सरफेस कनकेव होती है, दूसरी कन्वेक्स होती है. तो इस किस्म के लेंस को कहते हैं कनकेवो कन्वेक्स लेंस. एक ये कनकेव टाइप है, अंदर की तरफ है, दूसरी कन्वेक्स टाइप है, बाहर की तरफ है. इसको कनकेवो कन्वेक्स लेंस कहते हैं. ये 3 किस्में हैं कन्वेक्स लेंस की. आगे कनकेव लेंस है. ये वो लेंस है जो सेंटर से पतला होता है और एजेस से मोटा होता है, इसको कनकेव लेंस कहते हैं.
या ये वो लेंस है जो पैरेलल रेज को डाइवर्ज करता है, इसको कनकेव लेंस कहते हैं या डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अब देखें पहली डिफिनीशन के बताओ, ये सेंटर से पतला है, एजेस से यहाँ मोटा है, ये कनकेव लेंस है। सेंटर से पतला है तो इस किस्म का लेंस कनकेव लेंस है। या ये कि ये पैरेलल रेज आ रही है, ये रे आ रही है और ये रे आ रही है, तो दोनों रेज गुजर के डाइवर्ज हो जाती हैं। देखें तो इस किस्म के लेंस को कनकेव लेंस कहते हैं या डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अब इन रेज को बढ़ाएं पीछे अगर, तो ये देखें इस रे को और इस रे को पीछे बढ़ाएं तो इस पॉइंट एफ पे जाके मिल जाती हैं। तो ये एफ पॉइंट जो है इसको फोकस पॉइंट कहते हैं कनकेव लेंस का। अब कनकेव लेंस की भी तीन किस्में, टाइप्स ऑफ कनकेव लेंस, इसकी भी तीन किस्में। एक डबल कनकेव लेंस है जिसको बाई कनकेव लेंस कहते हैं। ये कौन सा होता है? जिसकी दोनों सर्फेसेज इनवर्ड होती हैं। मसलन ये डबल कनकेव लेंस है, इसकी ये सरफेस भी इनवर्ड है और ये सरफेस भी इनवर्ड है, दोनों सरफेस इनवर्ड है, ये इनवर्ड है ये भी इनवर्ड है, तो इसको डबल कनकेव लेंस कहते हैं। दूसरा है प्लानो कनकेव लेंस। ये वो कनकेव लेंस होता है जिसकी एक सरफेस प्लान होती है और दूसरी कनकेव होती है। इस किस्म के लेंस को प्लानो कनकेव लेंस कहते हैं। और तीसरा है कन्वेक्सो कनकेव लेंस। ये वो होता है, ये वो लेंस, वो कनकेव लेंस जिसकी एक सरफेस कन्वेक्स होती है और दूसरी कनकेव होती है। देखें ये कन्वेक्स सरफेस है और ये कनकेव सरफेस है, इसको कन्वेक्सो कनकेव लेंस कहते हैं। ये तीसरी किस्म है कनकेव लेंस की। अब लेंस से मुतालिक रिलेटेड टर्म्स भी हैं, कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं लेंसेज से मुतालिक। फर्स्ट टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसको सी से नोट करते हैं। ये कौन सी, ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली देखें ये एक सफ़ियर है, ये सफ़ियर है, इस सफ़ियर से काट के ये लेंस बनाया गया है। तो ये लेंस जिस सफ़ियर से बनाया गया उस सफ़ियर का ये सेंट्रल पॉइंट है, ये सफ़ियर का सेंट्रल पॉइंट है। तो लेंस जिस सफ़ियर से बनाया गया उसके सेंट्रल पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से नोट करते हैं। अब लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, एक किस तरफ है और एक किस तरफ है। ये दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं सफ़ियर के, इस लेंस के। नेक्स्ट टर्म ऑप्टिकल सेंटर। ये लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ये जैसे मसलन देखें ये डॉटेड पॉइंट है ये, तो इस डॉटेड पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ये डॉटेड पॉइंट सेंट्रल पॉइंट है लेंस का, इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इसके बाद अगली टर्म है प्रिंसिपल फोकस और फोकल पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? ये पैरेलल रेज आ रही है, ये देखें एक रे ये आ रही है और दूसरी रे ये आ रही है। ये रेज लेंस से गुजरने के बाद एक पॉइंट पे यहाँ इकट्ठी हो जाती हैं। ये जिस पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती हैं इसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं या फोकल पॉइंट कहते हैं। तो जिस पॉइंट पे रेज इकट्ठी हो जाती हैं लेंस से गुजरने के बाद उस पॉइंट को फोकल पॉइंट कहते हैं या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस, इसको कैपिटल एफ से नोट करते हैं। और लेंस के दो प्रिंसिपल फोकस पॉइंट होते हैं, एक इस तरफ होता है और एक इस तरफ होता है। ये दो फोकल पॉइंट होते हैं। आगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये कौन सी स्ट्रेट लाइन है? वो स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है। ये देखें सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ऑप्टिकल सेंटर है। तो जो स्ट्रेट लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरे और ऑप्टिकल सेंटर से गुजरे, इस स्ट्रेट लाइन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये स्ट्रेट लाइन ये स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। इस तरह कनकेव लेंस की भी इस तरह, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑप्टिकल सेंटर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये स्ट्रेट लाइन। आगे फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से नोट करते हैं। ये क्या चीज़ होती है? ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ ओ पॉइंट से एफ पॉइंट तक, ये जो डिस्टेंस है इसको फोकल लेंथ कहते हैं और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो ये एक डिस्टेंस है। आगे वर्कशीट है। वर्कशीट में मुख्तलिफ क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, इस वीडियो के दरमियान में आप देख लें। मुख्तलिफ क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वर्कशीट के अंदर, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपकी स्टडी इम्प्रूव होगी। तो ये वर्कशीट आपके बेनिफिट के लिए है। इस वीडियो के दरमियान में मैंने आपको वर्कशीट दी है, उसके क्वेश्चंस को पढ़ लें, उनको सॉल्व करें, उनको आंसर करें, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। So you subscribe this channel
इन दिस वे यू विल गेट ऑल द न्यू वीडियोस। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इससे आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलेगी। थैंक यू।